तमाम साथियों को या अली मदद। आज हम एक और बैतुल ख्याल मुलाकात के फरमान को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये फरमान एटलांटा यूएसए मार्च 17 2018 के मौके पर हाजिर इमाम ने फरमाया। मौला के मुबारक नाम से सलवत पढ़ते हुए आगाज करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। या मौलाए मेहरबान हमारी मदद फरमा। या मौलाए मेहरबान मदद फरमा। मौला मदद फरमा। या मौला अपने नूर से इस फरमान पर कुछ रोशनी डालते हुए मौला हमारी हिदायत फरमाना, ताकि तेरे नूर की रोशनी में मौला हम इस फरमान को पढ़ सके, समझ सके और उस पर अमल कर सके मौला। या मौलाए मेहरबान मदद फरमा, मदद फरमा मौला। My beloved spiritual children, I begin this Farman to you by giving to each one of you individually my best, best, best loving blessings. Khanavadan, Khanavadan, Khanavadan. I hope it has been explained to you that entering into the Bethel Khyal is not compulsory. So every murid takes that decision when he or she is ready to enter into Bethel Khyal. Has that been explained to you? This side said yes. That side was very silent. All right. Well, that is good. Bethel Khyal is voluntary. What is it? It is a tradition that goes back centuries and centuries in our tariqah of individual search for spiritual enlightenment. Search that individual chooses to make, and nobody has the right to say to any other individual within the Jamaat, you should enter into Bethel Khyal. So I will assume that you are here through your own free will, that nobody has said to you, you have to enter into Bethel Khyal. So far, as usual, in every Bethel Khyal Farman, Imam reminds us that Bethel Khyal is not compulsory, not required, but it is a voluntary individual choice, and only that person, each individual person, can say, I do want to enroll in Bethel Khyal for myself. Further down, we will read, there is the encouragement part, there is the understanding of the Bethel Khyal, and then there are blessings of Bethel Khyal. But that is secondary. Primary, initially, it is up to the each murid to make that decision. पहले दो पैराग्राफ के अंदर
मौला हमें दोबारा से हर हमेशा की तरह याद दिलाते हैं कि बैतुल ख्याल हमारे मजहब के अंदर जबरदस्ती के साथ नहीं और ना ही हमारी शरीयत का हिस्सा है, लेकिन हमारी तरीकत का हिस्सा है और हमारी हकीकत का हिस्सा है। और उसमें सिर्फ वो शामिल होते हैं जो अपनी मर्जी से ये नियत करते हैं कि हमें अपनी रूह के लिए कुछ करना है, ना कि जबरदस्ती से, ना कि किसी ने कहा कि आपको जाना ही चाहिए और जाना ही पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। ये इंडिविजुअल, हर एक की इनफिरादी चॉइस है, मर्जी है कि वो बैतुल ख्याल के अंदर दाखिल हो। हाँ, आगे चलकर उसके अंदर कुछ हिस्से बनते हैं कि बैतुल ख्याल में दाखिल होने के लिए इल्म दिया जाता है, समझ दी जाती है और उसके फवाइद बयान किए जाते हैं कि क्यों जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो मैंने कहा तो आप जाएंगे, इसलिए कि इसके अंदर फायदे बहुत ज्यादा है। उसमें आपकी रूह के लिए बहुत ज्यादा फायदे हैं, लेकिन आखिर में डिसीजन जो होगा वो आपका खुद का होगा, ना कि किसी और का। So at the end, it is up to the individual to enter the Baitul Khiyal if they wish to do something for themselves. Now, Imam further explains how Baitul Khiyal is not compulsory, but a practice of our tariqah for hundreds and thousands of years. So let's read this paragraph. Remember, the first paragraph Imam reminded us is voluntary, not compulsory. In the second paragraph, this is a source of a great happiness to me because Baitul Khiyal, not being compulsory, is still a very important aspect of our theological tradition. Our tradition for centuries has sought to encourage the individual in the practice of faith to search individually rather than always in a large group. And therefore, this is your individual choice to come into the Bethel Khiyal, and I hope that this is well understood all around. You see, just because you have chosen yourself, you have intended and decided voluntarily to come and seek the bowl, to seek to enroll into the Bethel Kia. Just by being there, we have not even started the ibadat yet. We have not even received the bowl yet. But just by being in front of the Imam, you made Imam happy. And Imam is telling you, if because and what you have just done, this will be a great source of happiness for you. If you look around yourself today, if you look around in the world today, anybody and everybody paying thousands of dollars to find
happiness. They are paying money, they are giving their times, vacations to find happiness. When the happiness is sitting right in front of you, inside you, inside your Jamaat Khana, inside your tariqah with the Imam. And that is Ibadat of Betul Khayal. This is the source of great happiness to me, Mala Baba says, and this will bring great happiness to you because Betul Khayal not being compulsory is still very important aspect of our theological tradition. आपने देखा कि मौला ने फरमाया कि आप जब यहाँ पर आए तो मुझे बहुत ज्यादा उससे खुशी हुई. खाली यहाँ तक पहुंचे हैं अब, अभी तक हमने इबादत भी नहीं की है, बैतुल खाल का बोल भी हासिल नहीं किया है. जस्ट सुकाम है कि આપણે બેતુલ ખ્યાલના બોલ લેવા મૌલાના સામે આવી ગયા. આપણને જોતા જ મૌલાને આટલી ખુશી મળી ગઈ. દુનિયાના અંદર માણસો ખુશી ગોતવા માટે, હાસિલ કરવા માટે હજારો ડોલર ખર્ચ કરે છે, પોતાનો કેટલો વખત ઝાયા કરે છે, જ્યારે કે ખુશી આપણા મઝહબના અંદર બેતુલ ખ્યાલની ઇબાદતમાં આપણા સામને ને આપણા અંદર જ છે. આપણે અહીંયા દોરા દોડી કરવાની જરૂર પણ નથી. આપણે એક એવી ચીજ જેના માટે પૂરી દુનિયા અહીંયા ઉहाँ પરેશાનીમાં ભાગી રહી છે, હજારો ડોલર ખર્ચ કરી રહી છે. આપણે અગર એ ચીજ ઇમામના સાથે ઇમામના તરફથી આપણને મળી શકે છે. મોલા કહે છે કે આ મારા માટે બહુ જ ખુશીનો કારણ બન્યો કે તમે બધા અહીંયા આવ્યા बैतुल ख्याल नो बोल लेवा. क्या फरमाया मौला ने कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है ये देखकर कि जमात अपनी मर्जी से, हालांकि ये कंपलसरी नहीं था, फिर भी अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं, जिससे मैं बहुत ही खुश हुआ हूं. लेकिन मौला याद दिलाते हैं कि ये बैतुल ख्याल जो है वो हमारे तरीके का, हमारी परंपरा का, हमारी ट्रेडिशन का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है. सेंचुरी से, हजारों सैकड़ों सालों से. और वो क्या है? Has sought to encourage the individual in practice of faith to search individually. जिस तरह से नाची ने पहले कहा कि हम एक दूसरे को इंकरेज कर सकते हैं, हिम्मत दिला सकते हैं, उसको इल्म दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उसके फवाइद बता सकते हैं, लेकिन आखिर में फैसला जो करना है वो हर एक को खुद को करना है. We can encourage each other, and this has been part of our tradition for centuries. So let's read this line. Our tradition for centuries has sought to encourage the individual in the practice of faith to search individually. This is very important part. The reason I'm emphasizing so much, because sometimes we are discouraged. We are discouraged going into the Baitul Kyal and getting a bowl. We should be encouraged.
How do we encourage? By giving them ilm, showing them how this has been an important part of our tradition, our tariqah, and what are the benefits of it, and then let them make that decision individually. That's how you do it. That is within, inside the Farman of the Imam of the time. It would not be outside of it, but very much in line with Imam's Farman. Don't we want to make Imam happy? And are we not seeking happiness ourselves? Then why would we discourage anyone from going to Baitul Khiyal? Matter of fact, we should encourage everyone. Then let them make that decision. So what are the benefit of Baitul Khiyal individual search? So let's read on that. Mullah says, rather than always in a large group, in example, evening Jamaat Khana, Majalis, where hundreds and thousands of people together pray, tasbiyat, ginan, a collective practice of ibadat. On the other hand, the Baitul Khiyal requires individual search, uniquely customized to each one of us, uniquely. And therefore, Imam gives you a bowl. You may have a bowl, the person next to you may have a bowl, but a different bowl. A person on the left side of you may have a bowl also, but possibly a different Isme Azam. So rather than one single tasbih, Giryazari or Ginan that we recite collectively, this practice is individual. ये इबादत जो है और उसकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही ज्यादा इनफरादी है, कलेक्टिवली नहीं है, यानी मुश्तरका नहीं है. शाम के वक्त जब हम दुआ पढ़ते हैं, गिरियाजारी की तस्बीहात निकालते हैं, एक ही तस्बीह सब मिलकर पढ़ते हैं, गिनान पढ़ते हैं वगैरह वगैरह, मजालिस के अंदर तस्बीहात, वो हमारी मुश्तरका इबादत है जिस पर हम एक दो चार तस्बीहों को लेकर सब मिलकर पढ़ते हैं. जबकि इबादत के अंदर आपके पास जो बोल है वो आपका जाती इनफरादी बोल है. हो सकता है कि आपके साथ में और कोई भी इबादत करता हो, और लेकिन उसका मुमकिन है कि उसके पास जो बोल है वो और कुछ हो, और आपके दूसरी तरफ जो बैठा हुआ है शख्स उसके पास भी बोल हो लेकिन और कोई बोल हो. हर एक के पास अपना जाती इनफरादी इसमें आजम. ये फर्क है शरीयत और मुश्तरका तौर पर कोई काम करने में, और हकीकत और इनफरादी तौर पर इबादत करने में. क्योंकि ये आपका जाती इसमें आजम है, यानी कि ये आपके और इमाम के बीच में है, ना कि जमात के बीच में. आपके और जमात के बीच में नहीं, आपके और इमाम के बीच में है. This individual, customized, personalized
Isme Azam for each individual is personal between them and the Imam, not collectively between them and the Jamaat. That is the difference between Hakikat, Betul Khayal, and Ibadat, and Shariat, Tasbiyat, Dua, and collective Ibadat in the evening. That is the one fundamental difference. So let's finish this paragraph. This is your individual choice to come into Betul Khayal, and I hope that this is well understood all around. When you sit, what are you seeking? Imam asks question. You are seeking, first of all, to set aside worldly matters so that you concentrate only on the spiritual, on your soul. And each one of you is born with a soul, and when you pass away physically, your soul is eternal. Remember that your soul is eternal. So, two things to remember in this paragraph, that ibadat, in ibadat, when you're seeking, you are doing two things at a time. One, seek to put your worldly matter aside, and then seek the spiritual matter. Concentrate on spiritual matter, and that is your soul, not your body, your soul. तो बोला सवाल पूछते हैं कि जब आप इबादत में बैठेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपनी दुनिया को एक तरफ छोड़ेंगे और फिर अपने बातीन की तरफ तवज्जो देंगे, क्योंकि वहां पर आपके पास एक रूह है। आप अपनी रूह की तरफ ध्यान देंगे। ये इबादत आपकी रूह के लिए है, आपके जिस्म के लिए नहीं है। क्योंकि जब आप इस दुनिया से गुजर जाएंगे तो आपकी रूह आपके साथ आने वाली है, जो हमेशा आपके साथ रहने वाली है। आप उसकी तरफ तवज्जो देंगे। Why do we pay attention toward the spiritual and the soul? Because that is permanent, that is eternal. The physical is temporary, which will be gone within 4 days. But the soul is eternal forever. So our attention, our concentration, our purpose of ibadat, our mindfulness should be toward something that is permanent, that is our spiritual life, this life of our soul, not the life of our physical body. When you sit, seek to set aside worldly matter and concentrate on the bowl that I will give you. Seek enlightenment, seek spiritual elevation, seek to set aside the worldly and to enter into the domain of the spiritual. I will come back to this line because this is the line Imam is teaching us step by step, like a father, like a mother to a child. How to. He's giving us a book, how to book. How do we get to that place? A checkbox, a list. This is how you're going to do it. He's making us a list. How we going to get to that part? Listen to this again. Seek spiritual elevation. Seek to set aside the worldly
and to enter into the domain of the spiritual. Each and every one of you has a soul. Search, and inshallah, search successfully. Search successfully. Let me take a couple of minutes to explain this paragraph. Very important. Step by step, line by line. What was the first checkbox? Set aside worldly matter. It's not physical. It has nothing to do with whatever is happening in your worldly life. But this is for your soul. So you should seek enlightenment for your soul. Seek enlightenment. I love the way Imam have made this list step by step. First of all, seek enlightenment. What is enlightenment? Are we talking about Nur, or are we talking about understanding of the Nur, understanding of the Batin, understanding of the spiritual life, understanding of ever living life, understanding of our soul? What is this enlightenment? That is the enlightenment. Understanding of things. So first we should seek enlightenment. So we know what we are doing and what are the benefit of it. What would be the end result of that? Seek enlightenment, their higher understanding. Because if you have that higher understanding, that insight, then not only you will enjoy and you will do this happily, but you also know the end goal. You know exactly what you are seeking and where you are going and what you're going to find and how you're going to utilize it and what are the benefit of that. मौला यहाँ पर सबसे पहले हमें एक एक लाइन करके माँ बाप जिस तरह बच्चों को समझाते हैं, हमें एक एक लाइन करके समझा रहे हैं कि देखो बेटा, बच्चों, पहले अपनी दुनिया को एक तरफ छोड़ दो, क्योंकि बैतुल ख्याल और इसमें आजम का कोई भी ताल्लुक हमारे जिस्म से नहीं है. इसका ताल्लुक हमारी बातीन, हमारी रूहानियत और हमारी रूह से है. और उसके लिए क्या इरशाद फरमाते हैं? सबसे पहले फरमाते हैं कि आप सबसे पहले क्या करेंगे? अपने दिमाग के अंदर एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग, इनलाइटमेंट का वर्ड यूज किया मौला ने, इनलाइटमेंट को सीख कर रहे हैं, एक आला अंडरस्टैंडिंग को पाए. क्यों? कि जब हमारे पास ये इस बात की समझ ही नहीं होगी कि इसमें आजम क्या है और किस तरह से वो काम करेगा और किस तरह से इबादत में क्या होने वाला है, तो हम ऐसा है जैसा अंधेरे में चल रहे हैं. तो मौला सबसे पहले फरमाते हैं कि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, सीक इनलाइटमेंट, ताकि आपको पता चले कि इसमें आजम क्या है, कैसे पढ़ना है, उसके क्या फायदे हैं, वो किस तरह से काम करेगा, फिर क्या होने वाला है, हमको क्या मिलने वाला है और हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, उसके फवाइद क्या होंगे और वो किस तरह से हमारे साथ हमेशा रहने वाला है. Within the two words, matter of fact, within one word, enlightenment, seek enlightenment. In that word,
Imam is telling us, teaching us, coaching us, literally coaching us how to. When we go to gym, when we go to find a new job, we have a trainer, we have a coach. Just like that, Imam, like a coach, like a father, like a mother, teaching their small little children step by step. This is how you're going to do it. And first thing he says that you seek enlightenment, insight. जिस तरह से एक बच्चा को पढ़ाने में आता है, जिस तरह से एक टीचर, एक कोच, माँ बाप अपने बच्चे को समझाते हैं, सबसे पहले मौला फरमाते हैं कि आप इसको समझने की कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करें. Second, seek spiritual elevation. So what is second? Spiritual elevation, not physical. Spiritual elevation. Now here, I think sometime our Jamaat, our friends, our dear and loving friends, because does not have a good understanding, they think when Imam says seek spiritual elevation, they instantly jump from 0 to 100. They think that when we sit in ibadat, what we are seeking to be Fanafi Imam. Like this. My friend, remember the word coaching and coaching children? We must learn how to ride a bicycle first. We must learn how to ride bicycle before we run and drive a car, before we fly a plane, and before we take a journey to the moon. We have to learn how to ride bicycle. मौला फरमाते हैं कि दूसरा काम आपको ये करना है कि अपनी रूह की तरक्की पानी है. हमारी जमात ये समझती है अक्सर कि जब मौला ने फरमाया कि अपनी रूह की तरक्की पानी है तो बस हम इबादत में बैठेंगे और फनाफी इमाम हो जाएंगे. वापस आप भूल गए कि मौला हमें बच्चों की तरह सिखा रहा है. पहले माँ बाप बच्चों को क्या सिखाते हैं? साइकिल चलाना सिखाते हैं, फिर गाड़ी चलाना, फिर इंशाल्लाह प्लेन को फ्लाई कर सकेंगे और चांद तक भी जा सकेंगे. लेकिन पहले साइकिल चलाना सीखनी होती है. So seek spiritual elevation step by step by step. That is the reason that we need insight. We need to have that enlightenment. We need to have that understanding that things are step by step by step. Because we are jumping and our mind is only here or there. We have forgotten the path. चूंकि हमारा ध्यान है कि यहाँ है और वहां जाना है, दरमियान का जो रास्ता था, the journey, we forgot. हम जो रास्ते में जो सफर करना था उसको भूल गए. जबकि हर चीज एक दायरे पर है, एक जर्नी पर है, एक सफर पर है. स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ना होता है. तो seek spiritual elevation step by step by step. A spark, a light, a bigger light, full flame, complete light, immerse into the light, become a light. Do you hear what I just said? Spark, light, bigger light, flame, immerse into the flame. Let me give you an example of that so you may understand step by step by step. You take a piece
of a metal, a rod, and you put that into the fire, does the piece of metal become fire instantly? No. What happens first? Does it give you light first? No. What happens? Becomes hot. It becomes hot. What happens second? All of the rust from the metal will get removed, because when it gets hot, all the rust is cleaned. We are not talking about a piece of metal, are we? We are talking about our soul. When we are in ibadat, when we take off on the journey, first thing will happen, all the rust, sin, ill thoughts, ill concept, all will be removed. All your worldly matter will go away. And that piece of rod will become pure. Your soul will become pure. What happens next? If you keep that rod in the fire, now it's going to get red. If you keep doing your ibadat correctly, you're going to see the spark. What happens then? You don't pull the rod out. You keep moving forward. Take that journey. Once the rod becomes hot, and it's going to give you the light. Now you can see the light coming out of that piece of metal. Now your soul, you will see those spark and the light and the bigger light. Now your soul will be lighted with the nur. The nur that you were seeking outside somewhere actually was within you, because your soul was so rusted that light was not able to come out. जब आपने एक पीस ऑफ मेटल को, ये एग्जाम्पल है, मिसाल दे रहा हूं मैं, कि अगर आपको कहा जाए कि आप एक लोहे के टुकड़े को, एक रॉड को आग में डालें, तो सबसे पहले क्या वो आग में डालते ही वो लोहा आग बन जाता है? नहीं, पहले वो गर्म होता है। ये लोहे की मिसाल नहीं, आपकी रूह की मिसाल है। जब आप इबादत में बैठेंगे, इसमें आजम को जोर से चलाएंगे, तो आपकी रूह गर्म होगी, उसमें हरारत पैदा होगी। अभी वो बर्फ की तरह फ्रोजन है, मुंजमीद है, वो पिघलने लगेंगी, उसमें हरारत पैदा होगी। फिर ऑन दी, जो लोहा आपने अंदर डाला था, उसमें से जितना भी जंग होगा ना, वो निकल जाएगा, साफ हो जाएगा। गर्मी की वजह से सारा जंग निकल जाएगा। अभी भी हम अपनी रूह की बात कर रहे हैं, उसमें से सारे गुनाह, बेकार की बातें, सब चीजें हट जाएंगी उसके ऊपर से, क्योंकि वो इसमें आजम के अंदर गर्म हो रहा है, उसको हरारत मिल रही है, नूर की हरारत, आग की हरारत। फिर क्या होगा? फिर उसमें से वो गर्म होकर आस्ते आस्ते लाल होने लगेगा, लाल होने लगेगा। अब हमारी रूह आस्ते आस्ते अपनी असल मकाम पर जा रही है, और वो लाल होने लगेंगी। लाल होने से मतलब क्या है? नूरानी होने लगेंगी। फिर उसमें से रोशनी फूटेंगी, फिर उसमें से लाइट निकलेंगी, फिर उसमें से नूर की चिंगारियां निकलेंगी, फिर उसमें से आपको वो नूर नजर आएगा। वो नूर जो हम बाहर देख रहे थे, वो आपके अंदर से ही हमारी रूह ने उसको कैच कर लिया। क्या किया था हमने? लोहे को आग में डाला था, अपनी रूह को इसमें आजम की आग में, उसकी गर्मी के अंदर हमने पकाया, तैयार किया, साफ किया, बुलंद किया, step by step by step. Finally, the rod will become a fire.
और फाइनली वो लोहा खुद आग बन जाएगा। अब आपकी रूह उस नूर के अंदर एक हो जाएंगी। आपकी रूह उस नूर के अंदर एक हो जाएंगी, कोई फर्क नहीं होगा। Your soul will become one with the nur and there will be no difference between your soul as you will merge into the soul of the Imam. And we are at the second part of this. Seek spiritual elevation, but don't jump. Seek step by step by step by step. Let's try to finish this paragraph and then we will stop. Seek to set aside the worldly and enter into the domain of the spiritual. You see that? If you have that enlightenment and what I just explained to you, you should be able to enter into the spiritual domain. If you understood what has been told, what has been coached, what has been teach, you should be able to enter into the spiritual domain. मौला फरमाते हैं कि आप दुनिया को एक साइड पर छोड़कर अपनी रूहानियत के अंदर उतर जाएं। अगर आपने वो तमाम चीजें समझ ली जो नाचीज ने अभी अभी बयान की है, तो फिर आपके लिए आसान होगा कि दुनिया को छोड़कर आप अपने बातीन के अंदर उतर जाएंगे। Each and every one of you has a soul. Search and inshallah search successfully. Search successfully. I cannot tell you how it makes me happy just by explaining this to you. Out of all who are present today, if one or two or three or five of you follow this guidance, Imam's guidance, not mine. I'm Garib and Nachiz, I'm nothing. What Imam has taught you, coached you in this one paragraph, if you understood this, then you should be able to search successfully. अगर आप में से एक दो चार पांच जाने भी अगर ये तमाम बातों को जो अभी अभी समझाई गई वो समझ गए हैं, ना कि ये इस गरीब के अल्फाज हैं, जो इमाम ने फरमाया अगर आप वो समझ गए हैं तो आप कामयाबी के साथ अपने बातिन के अंदर उतर जाएंगे और आपको कोई मसला नहीं होगा। इसको फॉलो करना सही तरह से, पहले समझ, फिर रूह की एलिवेशन, फिर बातिन के अंदर उतरना और दर्जा ब दर्जा ऊपर जाना, अपने लोहे को गर्म करना, अपनी रूह को गर्म करना, उसमें से चिंगारी निकलेंगी और वो आग बन जाएंगी और आपकी रूह नूर के अंदर एक हो जाएंगी, वो अपने असल के साथ एक हो जाएंगी और आप इसी दुनिया में कामयाब हो जाएंगे। So let me stop here. Thank you so much for listening attentively. जी Subhanallah, sir. This Farman looks very, just by reading it looks very simple, but it has a lot of details that you explained today and shared with us. So it is, shukr alhamdulillah, very important points that we learned today. Friends, if you have any questions, please put in the chat box, or you can unmute your device or raise your hand feature. Sir, friend is asking that once we understand, once we seek the enlightenment by understanding, and then we'll start elevating our soul, and then the next step is enter into the domain of spiritual. So, sir, if you can put some more emphasis on the third one, the enter into the domain of spiritual, please. जी domain of spiritual world, let's say, because setting aside a physical world
and entering into the spiritual world. Where is that spiritual world? Inside. What is that spiritual world? Your soul. What are we seeking? The nur within it. So three things now. When you think of the Baitul Khayal, Isme Azam, Ibadat, and this has been taught before, set aside. Don't do ibadat for your physical benefit. Seek ibadat, seek bowl for the sake of spiritual elevation. So how do you do it? You enter into the physical domain. Sorry, your spiritual domain, your personal world. रूहानी दुनिया के अंदर ये काम होता है, ना कि जाहिरी दुनिया के अंदर। जब हम इबादत करने बैठे हैं, जब हम बैतुल ख्याल का तस्वुर करें, इसमें आजम की बात करें, तो उसके अंदर दुनिया, जिस्म और जाहिर की कोई भी चीज नहीं है। उसको आप हटा दें, इसको छोड़ दें। जिस्म के फायदे के लिए इबादत ना करें। किसके लिए इबादत करें? रूह के फायदा के लिए। और कहां पर करेंगे? अपने रूहानियत के अंदर उतर कर, और वो आपके अंदर है। उसको आलम शख्सी कहते हैं, पर्सनल वर्ल्ड। इसीलिए हम आंखें बंद करके इबादत करते हैं। आंखें भी बंद कर दें, कान भी बंद कर दें, जबान भी बंद कर दें और अपने अंदर उतर जाए। अब आपका इसमें आजम आपके अंदर चलेगा, खामोशी से चलेगा, किसी और को पता नहीं चलेगा, आपके अंदर उतर जाए। यानी कि आपका ध्यान जो है वो अंदर होना चाहिए, बाहर यानी कि जिस्म की तरफ नहीं। That is entering into the domain of spiritual world. So where is the spiritual world? यही मौला ने फरमाया कि आप अपनी रूहानियत के अंदर उतर जाएं। वो कहाँ है? वो आपके अंदर है, आपके जाती जिस्म के अंदर है, आपके पर्सनल वर्ल्ड के अंदर है, आलम शख्सी के अंदर है। और वहां पर आपको आपकी रूह को वहां से उबारना है। यानी कि आपकी रूह के अंदर वो दुनिया छुपी हुई है, वो नूर छुपा हुआ है, वहां पर उतरना है। सो सेट असाइड, दैट्स द की वर्ड। आप अपनी दुनिया को एक तरफ छोड़ दें। नाचीज ने बहुत मर्तबा इस बात को समझाया है कि हम कभी कभार इबादत को जिस्मानी फवायद के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप ऐसा ना करें, अपनी रूह के फवायद के लिए इस्तेमाल करें। डोंट यूज योर इबादत इन इसमें आजम फॉर योर फिजिकल body or physical difficulties or your physical benefits. Use your ibadat in Isme Azam for your spiritual enlightenment and benefit. जी Ji, Subhanallah, sir. Thank you for explaining the personal world. Sir, friend is also asking in the same, within the same thing. Asal Makan is within. If you can please explain that. So I think friend is asking more about personal world now. जी असल मकान, the original world. What is our original world? The world of the soul. And where is that world of the soul? Within your personal world. So if we say our personal world is as huge as the universe, then you would not be wrong. Matter of fact, there is a Kalam Mola Ali that you think you are a particle when entire universe is hidden within you. Within you, not in your body, within your soul. Entire universe is hidden within your soul.
and that is the personal world and a universe within your soul, your spiritual world, and there is where you will find your nur, your success, everything that has to do with soul and eternal is within yourself. So seek inside, not outside. G. Yes, sir. Thank you very much, sir. Alame Shaksi, that's G. another name, right, for personal world. या Sir, आलम शख्सी उर्दू में आप कहेंगे आलम शख्सी, इंग्लिश में कहेंगे पर्सनल वर्ल्ड. जी. sir, within the same context, a friend is also asking about the ibadat, Baitul Khiyal ibadat, but friend is asking why we practice bandagi during various majalis. Oh, that's easy. Remember riding a bicycle? Learning how to ride a bicycle? Each ibadat reminds us, each majalis ibadat reminds us that you need to pay attention to the ibadat. That is our just our reminder that don't forget that you must do your ibadat. Ji. Yeah, that helps every time when we go for different majalis. Ke, there is a personal world, and we have to seek the personal world too. So that's a reminder to us. So good, thank you, sir. So next time when we go in majalis and sit for ibadat, bandagi, we do the bandagi, we remind ourselves that. So thank you. Sir, we'll take the hand raise. Gulzar, you can unmute your device, please. Gulzar, please unmute your device. You should be able to do it. All mics are open. All right, we can take the next. Sir, friend is asking, explain seven mo saman. Sat mo saman. I don't understand the question. Zinat, please explain what are you trying to tell us? Sat asman. Please explain Sat asman. Sat Asman. Well, it's not in the subject, but short reply because you ask. Seven heavens are called seven Asman. There are seven heavens between a Momin and Imam being the Hujjat Azam. Those are the seven heavens between Imam and the Momin. Imam is the eighth heaven for a Momin. हमारे और इमाम के दरमियान में 7 आसमान है, यानी कि 7 जन्नतें हैं. इमाम 8वीं जन्नत है, सबसे ऊपर की जन्नत, और वो और उनके नाम ये हैं: मुस्तजीब, माजून, माजून मुतल्लक, दाई, दाई मुतल्लक, हुज्जत, हुज्जत आजम. ये 7 आसमान, 7 जन्नतें हैं और 8वीं इमाम है. यानी कि हर एक को इन 7 दर्जात से गुजर कर स्टेप बाय स्टेप इमाम तक पहुंचना होता है. जी. Sir, we missed some of the explanation because I think your mic was a little bit freezed. If you can explain it again. Okay. 7 heavens are 7 asmans are 7 heaven, and imam is the 8th
of that. The names of the 7 heavens are, or 7 steps before we get to the Imam, and everyone must go through the 7 Asman, 7 heavens. The name of them are called Mustajib, Mazun, Mazun Mutallak, Dai, Dai Mutallak, Hujjat, Hujjat Azam. ये 7 आसमान, 7 जन्नतें हैं जिससे गुजर कर हमको इमाम तक पहुंचना होता है, और इमाम 8वीं और सबसे ऊपर की जन्नत है। जी Subhanallah, sir. Thank you for explaining that to us. Um, I think Gulzar is ready now to talk. Gulzar, do you want to unmute? Yes, shukar bola. Yeah. याली मदद याली मदद याली मदद। इससे इसमें है ना, जैसे स्टार्ट मतलब सर्च एनलाइट सीक एनलाइटमेंट है, उसके बाद जैसा वहां पे समझाए कि अपने को एनलाइटमेंट का मतलब है कि सारी चीज को अंडरस्टैंड करते हुए अपने को आगे जाना है, लेकिन फिर वापस अली पप्पा बोल रहे कि ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैज अ सोल, सर्च एंड इंशाल्लाह सर्च सक्सेसफुल। तो ये वापिस सर्च आया ना सर, तो वहां पे मतलब क्या उसका समझाओ ना सर प्लीज। जी ऊपर सर्च नहीं है, आप देखा ऊपर सीक है, ये वर्ड जो है ना सीक, और नीचे है सर्च। ठीक है, तो इसको अलग अलग करके देखें। सीक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को समझना। सर्च का मतलब क्या होता है कि चीज को ढूंढना। देखा, ये दो अलग अलग अल्फाज है, किसी चीज को समझना और किसी चीज को ढूंढना। पहले आप उसको समझे, फिर उसको ढूंढे। जी थैंक यू सर, शुक्र अल्लाह। हाँ सर। जी इंग्लिश कैन बी अ फनी लैंग्वेज समटाइम, राइट? जी Yes, sir. So it's seems so easy to see those words, but these words are tricked, to understand. के यस, पहले search करना है, then seek करना है. So सीख पहले so करना है, सर्च बाद में करना है। sorry. So पहले seek करना है, फिर search करना है. So understand करना है, and then we have to get that. So thank you. शुक्र Full अल्हम्दुलिल्लाह, of wisdom. Yes. शुक्र Friends, अल्हम्दुलिल्लाह। if you have any questions, please put in the chat box or you can raise the hand. Sir, we have another friend, Zulfikar. Please unmute your device, Dr. Sam. Yari Madad Aziz sir. या अली मदद। I loved your comment and your example of the iron becoming like fire when it is in touch with fire. And there is a Gatpar Ginan which often says that Paras Parse Loha Rang Palte. That is, सुभान if you अल्लाह, have the real fire of the Ismi Azam or the nearness of the Imam, then your life changes into something like angelic. Just a brief comment. Yali Madad. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी Sir, friend is asking, how do we know we have ascended to the next level? you would know, no doubt in your mind. You will be more peaceful, you will be more calm, and you will be more happy. That's how you would know. There are a lot of other signs, but those are the initial signs that you will become peaceful, more happy, more calm in your life. That's how you would know. But when you cross some of those levels, you will know for sure because the light will start to take off, and you will know it for sure. There will be no doubt in your mind. Ji. सर Madad Um, sir. ओ सॉरी। go ahead.
या सर इसमें फिर बोला लास्ट में ऐसा क्यों बोलते हैं कि सर्च हम्म, सक्सेसफुली जी, ये एक दुआ भी है हमारे लिए और हमारे लिए इंकरेजमेंट भी है कि खाली सर्च ना करें, कामयाबी के साथ सर्च करें। ये जैसा हम बच्चों को बोलते हैं ना, जाओ बेटा कामयाब होकर लौटना, राइट। हम उर्दू में जब अपने बच्चों को कॉलेज भेजते जी हैं, काम के लिए हाँ भेजते हाँ हैं, तो हम कहते हैं जाओ बेटा कामयाब होकर लौटना। In this paragraph, literally I can see Mola Bapa as a mother and us as a children. That's how he's teaching us, just like teaching us like a children. सही बात है Yeah, सही don't बात है search, search successfully. हाँ सही है थैंक यू सर थैंक यू Yeah, बहुत अच्छा समझाए सर आपने बहुत अच्छा shukar मिसाल alhamdulillah. देके Shukar बहुत अच्छा alhamdulillah. You know, the last question was very beautiful. That lady was asking, how do we know if we are successful? I said it in Urdu. I think there was a good question for all our other listeners in English. She was asking, how would we know? Because we talked about those seven heavens. And I said, you will know for sure. The three things happen first. When you do a successful ibadat again and again and again, you will become more happy. You will become more calm, you know, and you will become more peaceful in your life. You will feel that in your physical life, that you have become more calm, more happy, and more peaceful in your life. As you cross those stages, and when the light takes off, you will have greater and better understanding of your success. And there will be no doubt in your mind. That was I was explaining in Urdu. I just thought I should explain that in English. G. Sir, friend is also asking to explain the seek and the search question answer again in English, please. Right. So for English speaking, this was easy. The word seek is not same as search. Seek more has to do with learning and enlightenment, meaning you understand and then do something. That is your seek, the word, English word. Search has to do with something you are searching for now, because you know what you need, because you have seek to understand. Now you are searching for what you have already learned. So seek is not the same as search. Seek comes first, search comes second. First you learn what you need and how you're going to do it. So you do the seek, and then you search. And you search for the things that you understood. So it's a perfect combination of journey. First you seek everything that you want, and then you search for those things that you need. G. Sir, Yalimada Chenazir. So it is so deep. Every word, the word sit, the word seek enlightenment, seek spiritual elevation, seek, then search successfully. It's so much. This every word is so deep, and mashallah, you're explaining it so deep. Thank you so much. Shukran, alhamdulillah. Shukran. So we have 4 more minutes before we stop, as we have another session in about 10 minutes. So 4 more minutes. Go ahead. Sir, friend is asking that Mola has made all of us die. So which heaven he's taking us to? He wants us to believe in the fifth heaven.
It lives in the fifth heaven. That is his prayer for us, wish for us to be. So how do you get to the fifth heaven and become a true Dai? By crossing 1, 2, 3, 4 heavens, right? Becoming Mustajib, Mazun, Mazun e Mutallak, and Dai e Medud. So you may become a complete Dai on the fifth heaven. G. Thank you, sir. Sir, that also explained this question. Can you please explain more on each step of the progress as you proceed towards seven heavens? Right. Yeah, Thank you. exactly. Mhm. I think Barkat Bhai want to say something. How about we Yes, give him opportunity to say it? Go yes, ahead, Barkat Barkat Bhai. bhai. याली मदद एवरीवन। Yeah, मैं Madad. इसी क्वेश्चन पे आना चाहता था। किसी ने पूछा था कि सेवन हेवन जो है वो कौन सी चीज है, और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पी नासिर खुसरो की किताब वजह दीन के अंदर ये तमाम दर्जात जो है वो बताए गए हैं। आज जितने भी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं तमाम को ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक आपने जहां कहीं भी वाइज सुनी है या कहीं से भी नॉलेज लिया हुआ है, उस नॉलेज को आज की जो अजीज सर की क्लास है उसको आप थोड़ा सा कंपेयर करें। अजीज सर ने आज एक फरमान, छोटा सा फरमान है जो हम जमात खाने के अंदर हमने कितनी मरतबा सुना है, लेकिन हमने ऊपर से वो निकल गया है। कभी हमने इसके ऊपर गौर नहीं किया कि इस फरमान के अंदर इतना सारा डेप्थ हो सकता है। और हमने अपने दिलों के अंदर ये देख लिया है कि इल्म के अंदर फर्क है। दो अलग अलग इल्म है। बादल के अंदर जो पानी होता है वो भी पानी है, पहाड़ों पे भी जो बर्फ होता है वो भी पानी होता है, और नदी नालों और गंदे नालों के अंदर भी वही पानी होता है। लेकिन पानी की जो असल हकीकत है वो बादल के अंदर है। जो इमाम का इल्म है वो सच्चा इल्म है। जब वो दुनिया के अंदर आया है तो वो आस्ते आस्ते डिफरेंट लोगों से होता होता मिक्सअप होके वो मेला हो चुका है। और हमें जो इल्म मिला है वो दर हकीकत हमें मेला इल्म मिला हुआ है। कहीं किताबों के अंदर, कहीं किसी ने कोई इल्म दे दिया, किसी मुल्ला मौलवी ने कोई बात कही दी, लेकिन इमाम का जो इल्म है वो बादल का जो प्योर इल्म है जिसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। तो जहां हेवंस की बात हो रही है तो आज हम तमाम अपने दिल के अंदर ये देख ले कि जो इल्म आज तक हमने पहले लिया था, क्या वो इल्म और आज जो हम इल्म ले रहे हैं उसमें कुछ फर्क है कि नहीं है? क्या हमारा दिल खुद गवाही दे रहा है कि नहीं ये तो कोई अजीब ही इल्म है जो आज तक, मेरी 30, 40, 50 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन आज तक मैंने कभी भी इस किस्म का इल्म तो मैंने सुना नहीं है। अगर हमारा दिल ये गवाही देता है और हमें एक सुकून मिलता है कि नहीं मुझे तो ऐसी क्लास कभी मिस करनी ही नहीं चाहिए। इतने छोटे फरमान के अंदर अजीज सर अगर इतनी सारी बातें बता सकता है तो बाकी की क्लासेस के अंदर क्या क्या वो बताते होंगे। तो ये जो पहला स्टेप है, हमने अपने आप को, बाकी की जमात जो इस वक्त इल्म नहीं ले रही है, इल्म की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है, वो कहते हैं नहीं मुझे किससे कहानी आई सुननी है, मुझे इस किस्म का इल्म से कोई लेना देना नहीं है। तो हमने क्या किया है, हमने अपने आप को उस जमात से अलग कर दिया है। हमने पहला स्टेप जो मुस्तजीब का है वो हमने ले लिया है। हमने ऑटोमेटिकली इन क्लासेस के अंदर आके हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह मौला के करम से हमने पहली जन्नत के अंदर, हम पहले स्टेज के अंदर, पहले हेवन के अंदर हम ऑटोमेटिकली दाखिल हो गए हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा दिल हमें गवाही दे रहा है कि हम उस किस्म का इल्म ले रहे हैं जिस किस्म का इल्म तो मुझे दुनिया के अंदर कहीं से नहीं मिल रहा था। तो हमने पहली जन्नत के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं, हम मुस्तजीब हो चुके हैं। अब हमें माजून की तरफ जाना है। माजून सेकंड स्टेप है, जब हमारे पास इतना इल्म, इनफ इल्म आ जाएगा कि जबान से हम कुछ इज़न कर सकेंगे। जिस तरह अजीज सर आज इज़न कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं। आज हम कोई भी जिस तरह अजीज सर बोल रहे हैं
हम वो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा हम भी अजीज सर की तरह बोलना शुरू करेंगे, वो इज़्न देना शुरू करेंगे, हम इतने पक्के हो जाएंगे, हमारे इल्म के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा। आज हम अजीज सर को कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, आपने देखा है कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो वो इलॉजिकल जवाब दे रहे हो हमें, नहीं, वो कुरान से दलील देते हैं, इमाम के फरामीन से, बिना सिर खुसरो की किताबों से, दाइयों की किताबों से। वो यहाँ वहाँ की बातें नहीं करते, वो रेफरेंसेस के साथ बात करते हैं। हम चैलेंज करें अजीज सर को किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर, और वो हमें बता सकेंगे कि कुरान की इस आयत के अंदर इसका जवाब मौजूद है, वो इज़्न दे रहे हैं। ये हम सब के लिए खुशकिस्मती है कि हम तमाम ने उन 7 हेवंस में से ऑटोमेटिकली पहले हेवन के अंदर कदम रख लिया है। हमारा दिल हमें गवाही देगा कि हमें इससे बेहतर इल्म कहीं नहीं मिल सकता है। और जब हम इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सर ने आज ही कहा कि जर्नी जो है वो बीच का रास्ता है, उसको हमें तय करना है मंजिल तक पहुंचने के लिए। और जो इस मंजिल के अंदर चलता रहा, जो रोजाना क्लासेस के अंदर आता रहा, तो हम एक वक्त आएगा कि इन 7 हेवंस को अपनी नजर से हम देखेंगे, हम देखेंगे, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा दिल हमें गवाही देगा। डॉक्टर जब बनते हैं, जब क्लासेस के अंदर जाते हैं, वो 5-7 साल का कोर्स करते हैं, तो कोर्स करने के बाद जब उसको सर्टिफिकेट दी जाती है, तो सर्टिफिकेट लेने के टाइम पे उनको ये यकीन होता है कि मुझे अगर किसी मरीज के ऊपर ऑपरेशन पे डाला गया और इसका हार्ट सर्जन किया या कुछ भी ऑपरेशन किया, तो वो कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं, क्योंकि उसको वो चीज सिखाई गई है और वो कर सकता है, उसको यकीन होता है। वो सर्टिफिकेट जो है वो एक पेपर होता है, लेकिन असल जो हकीकत है, जो एक्सपीरियंस है, वो उसके दिल के अंदर होता है, जिससे वो काम करता है। और आज अजीज सर हमें जो दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, अगर हमारी क्लासेस इसी तरह चलती रही तो वक्त दूर नहीं कि हम साथ में आसमान तक भी ना पहुंच पाए। और इमाम ने कहा तुम खुद इसको महसूस करोगे, कोई तुम्हें आके बताने वाला नहीं है। बस मुझे इतना ही छोटा सा आपके साथ शेयर करना था। थैंक यू। Thank you so much, Barkat Bhai. Thank you so much. Subhanallah, Subhanallah. Thank you, Barkat Bhai, for giving that feedback. Thank you. Sir, friends were confused about the class, but we mentioned that Yeah. it's in the afternoon. Okay. नाचीज की एक और सेशन है, जो प्राइवेटली मेरी एक सेशन है यहाँ पर, मैं उसकी बात कर रहा था। माफी के साथ, I did not mean to confuse everyone. We do have another session for everyone at 1:30 on Zoom channel. Sir, one last question. Sir, friend is also asking about if you can explain about 7 earths as we explained 7 asman. Thank you. That will be easy. If you think of the earth and the heaven, so if there is a heaven, there must be a earth, right? So if we say Mustajib is the earth, then Mazun would be the heaven. Mazun and Mutalak is the heaven, then Mazun would be the earth. On top of each other, on one side they are the earth, on the other side they are the heaven for the lower ground. So each one, so absolute earth is Mazun, absolute earth, Mazun. Mustajib, Mafi, Mustajib is the absolute earth. Mazun on one side is the heaven for Mustajib, and the earth for Mazun and Mutalak. And on. Imam is the absolute heaven, and all others in between are heaven on the one side and the earth on the other side for the level above. आप समझ गए कि हर दर्जा जो है अपने से ऊपर के दर्जे के लिए जमीन होता है और अपने से नीचे के दर्जे के लिए आसमान होता है. So those are the 8 or the 7 heavens and the 7 earth, and the Imam is the absolute heaven where the Mustajib is the absolute earth. जी.
He says, Shukar, you explained that, and to clear that with the friend that if there are 7 heaven, then there is of course 7 earth, and this was very good explanation. Thank you. जी Okay, sir, I don't see any more questions in the chat because most of us, we already explained that. Explain translation, please, from Barakat. Sir, friend is asking if you can explain what Barakat Bhai said. So, that will take another 30 minutes. Bakr Bhai went so fast and he said it so much. And I do not deserve all the good comments he gave me because all is belong to the Imam Zaman. And I am nothing, nobody, Nachis, Garib. All the ilm is belong to him and him only. And that's all I could say in English and in the translation of Barakat Bhai's ilm. But he made a lot of good points. If you are truly seeking the ilm, seek true ilm of the Imam, and that was uh, the uh, the essence in the short words. Thank you, everyone. Thank you for joining us. Inshallah, all of us will meet again at 1:30 my time, Dallas time, Central Standard Time, and we have another wonderful session coming up on the tawil of the fish. मच्छी की तावील के बारे में आज हम बात करेंगे अगर आप नाचीज को इजाजत देंगे तो थैंक यू फेयर thank you, sir. Thank you very much for, enlightening us all the time and sharing the knowledge with us. Thank you, friends, for joining, and hope to see you again back this afternoon. Yali Madad, everyone. थैंक यू याली मदद Thank you, sir. Yali Mother. Nyali Mother, thank you. Thank you very much. Madad. Thank you, Niyali Madad. Yari Madad. याली मदद to all